Hello children, I welcome you all in my YouTube channel and Radha online classes. Today I am going to take class 6 and the chapter we are doing is light, shadow and reflection. About light I have already told you in my earlier videos and in our earlier classes. Let's today study about shadow. Shadow is very important topic and very interesting too. So let's start with me. What is shadow? Shadow means परछाई. In Hindi we are calling that परछाई. इसका हिंदी में meaning क्या होता है? परछाई. परछाई कब बनती है और क्यों बनती है? when the source of light, जब light हमारे ऊपर strike करती है, means object is of three types. Object is of three types. First is what? Transparent. Second is translucent and third one is opaque. तो ट्रांसपेरेंट में तो लाइट क्या करती है? इट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट, तो इसमें तो शेडो फॉर्म नहीं होगा. सेकेंड इज ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट थोड़ा सा उसको रोकता है एंड कुछ लाइट को पास होने देता है, तो यहाँ शेडो फॉर्म होती है बट दैट इज डिमर, थोड़ी सी ये डिम होती है. लास्ट कम टू ओपेक. ओपेक बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि हमारे अंदर से लाइट पास हो जाए, दैट ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट पास हो जाए. Like we are also the opaque object. We are coming under opaque object. जब हम लोग लाइट के you can see shadow कब फॉर्म होती है? जब ये लाइट जो है, ये लाइट हमारे ऊपर आती है and we have stopped that light. जब हमने उस लाइट को स्टॉप किया तो उतना पोर्शन जो है लाइट नहीं गया and that पोर्शन एक डार्क पैच में कन्वर्ट हो गया. नीचे हमें वो पैच दिखाई देगा. दिस इज नोन एज शेडो. ये पैच को हम स्क्रीन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्क्रीन. मीन्स फॉर शेडो वी नीड थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज व्हाट? सोर्स ऑफ लाइट. सेकेंड इज व्हाट? ऑब्जेक्ट, दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड वन इज व्हाट? स्क्रीन. यस, जिसके ऊपर शेडो बनेगी, दैट स्क्रीन. तो स्क्रीन और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में क्या होता है? दैट ओपेक ऑब्जेक्ट. सो how you can define this? You can define in this manner. The dark patch formed behind an opaque object. Opaque object के just back में, या कह सकते हो source of light और object के बाद में जो form होता है, that is form behind the opaque object when kept in the path of light is called shadow of the object. This is the shadow of the object. स्क्रीन एंड सोर्स ऑफ लाइट के सेंटर में क्या रहता है? ओपेक ऑब्जेक्ट. एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के सामने मीन्स ऑपोजिट. यू कैन से इसके ऑपोजिट में क्या बनेगा? इसका शेडो बनेगा. व्हेन वी मूव, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द शेडो इज आल्सो मूविंग विद अस. ओके, इन द मॉर्निंग व्हेन वी आर मूविंग, तो आप देखते हो आपकी परछाई भी आपके साथ चलती है. बट इफ इन तीनों में से अगर एक भी चीज गायब हो गई, सपोज सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं रहा, तो कोई शेडो फॉर्म नहीं होगी. अगर हम स्विच ऑफ कर दें लाइट को तो अंधेरे में हमें अपनी शेडो नहीं दिखाई देगी. बट व्हेन देयर इज लाइट, द शेडो इज फॉर्म्ड. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ओपेक या ट्रांसलूसेंट, राइट? एंड स्क्रीन इज आल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग. सो थ्री थिंग्स आर नेसेसरी फॉर formation of shadow, that is source of light, opaque object and screen on which the shadow is formed. Okay, so how the shadow is formed, it is clear to you. When the source of light falls on an opaque object, it forms a shadow on the screen just opposite to the object. Okay, so I think shadow and what is shadow and how the shadow is formed is clear to you. Now what are the conditions necessary for formation of shadow? There are three things necessary. Just now I told you source of light, opaque object and screen. After that we will read कि शेडो जो है, शेडो से हमें उसका साइज और शेप दोनों का पता चलता है. बट कलर हम नहीं पता लगा सकते. अगर हम रेड कलर की ड्रेस पहन के गए और सोचे कि शेडो में भी रेड कलर आए, नो. ऑलवेज द शेडो इज डार्क इन कलर. ओके, डार्क पैच रहता है. तो वी कैन ओनली इमेजिन और वी कैन ओनली आइडेंटिफाई द शेप एंड साइज of that object, not the color, right? मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगी about the shadow just now. See children, here is the first feature of shadow, that size and shape of the shadow. It depends on what size and shape of an object. Object का size and shape कैसा है, आपके shadow का shape and size भी वैसा ही होगा.
right? The next thing is means it's depend on what shape and size of the object. Next, shadow are longest. This is important one. Shadow जो होती है वो हमारी longest होती है in the morning as well as in the evening. Shadows are longest in morning and evening, but shortest in noon. You can see here is the morning. ये आपकी shadow बनेगी, ये लंबी बनेगी. नून में बिल्कुल आपके सिर के ऊपर सोर्स ऑफ लाइट रहेगा, तो शेडो आपकी सबसे छोटी होगी. इवनिंग में भी ये लंबी होती है. ओके, सो दिस शेडोज आर लॉन्गेस्ट इन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड इट इज शॉर्टेस्ट इन नून. क्यों? क्योंकि नून में वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर रहता है. जब सिर के ऊपर बिल्कुल रहेगा तो ये जो इसका जो शेडो फॉर्म होगा वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट? इफ यू चेंज द डायरेक्शन, अगर आप अपनी मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, सपोज यू आर मूविंग टू द राइट, तो शेडो आपकी लेफ्ट में फॉर्म होगी. मीन्स फ्रंट में आपकी अगर शेडो बन रही है और आपने एकदम टर्न किया तो आपकी शेडो भी डायरेक्शन उसी तरह से चेंज करेगी, जस्ट ऑपोजिट टू जैसे वो पहले बन रही थी उसके ऑपोजिट में शेडो फॉर्म होगी. इन दिस, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर मूवमेंट, your shadow will also change its direction. Okay, it will always form just opposite to the object. Okay, so in this way we have done what? Size and shape of the shadow. Now we will do shadow and colored object. I just want to tell you in this shadow and colored object mein, this is what, see children, here we are, shadow and colored object. शेडो एंड कलर्ड ऑब्जेक्ट, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? कलर ऑफ द शेडो डज नॉट चेंज वेदर योर ऑब्जेक्ट इज ऑफ एनी कलर, दैट विल बी, शेडो विल ऑलवेज बी डार्क, राइट? नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेडो. द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेडो? नंबर वन, an object, an opaque object cast a dark shadow. Always keep in mind what? Opaque object. Opaque object जो है that cast a dark shadow, right? Dark shadow. Then come to special, irrespective of color, चाहे वो किसी भी color का हो, opaque object will cast a dark shadow. Next come to translucent. Translucent object cast weak shadow. It will cast a weak shadow, means dim shadow आएगा. Then third is transparent की बात करते हैं तो it does not form any shadow, right? I think characteristics are clear to you. मिलते हैं अपनी next video में with the next new topic, that is pinhole camera मैं आपको बताऊंगी. As well as one more topic is left, that is what? Reflection, that we will discuss in our next class. Till then children, goodbye, take care, and don't forget to subscribe, like and share my channel. Thank you and have a nice day.